टीचर और डिफरेंट स्टूडेंट में बेसिक अंतर आता है कि टीचर का पर डे प्रेजेंटेशन होता है और फ्रेंड्स क्या है, कुछ स्टूडेंट पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन टीचर को तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो आज क्लास आज स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे I have planned to discuss the Food Safety and Standards Act 2006. As you know that this was enacted in 2006, and here this is the object of this particular act. As you know that preamble always denotes object of the statutes. Here there are four objects I will discuss later on, and in this particular sections, total section is 101, and there are two schedules. It means this particular act contains 101 section and two schedules. Regarding our semester exam and our syllabus in Faculty of Law DU, as you know that I always start from the previous year question paper. Again, I will start in the same manner. कोई modify कर दे रहा है क्या? Something I look syllabus of DU LLB. I think someone has modified this PDF file. I don't know how it has been modified, but someone has modified and it looks something different. Okay. This is the सुमित तुम मॉडिफाई किए हो क्या इसको? Okay, leave it. फिर भी स्मार्ट लग रहा है. The point is that we have to, in the syllabus, we have to discuss the Food Safety and Standard Act 2006. Regarding this particular act, something has been prescribed in your syllabus. That is, we have to discuss definition of food, adulterant, contaminated, like these points. At the same time, we have to discuss the Food Safety and Standard Authority of India. That is called FSSAI. FSSAI, that is the FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. And we have to discuss state food safety and standard authorities, its establishment and function. When I searched in the whole Bear Act as well as regarding the website of every state, I got information that here state food safety and state standard authorities are not appointed, and to perform work in the state, commissioner is appointed. In each and every state, who is appointed? Commissioner is appointed in that particular state. In this way, we have to discuss FSSAI, commissioners, establishment functions, food safety officers. In this act, there are several officers regarding, for example, food safety officer, designated officers, commissioners, food analysts. I have made a chart I will discuss later on, and these are the, for example, my point is that these are your syllabus. And in your syllabus, there are three landmark judgments which have been mentioned. Here is that M. Mohammed versus Union of India. In this case, meaning of the food was discussed. Mrs. Nestle India Limited versus Food Safety and Standard Authority of India. Something information about this, but I am not in a position to tell something about this. Regarding earlier, I was not knowing about the earlier I was not knowing whether it was mentioned in the syllabus or not. But now it I got information that in your syllabus there are three cases. That is, the first is Mohammed, second is the case is missing. But in new syllabus, Swami Achyutanand Tirth case has also been mentioned. It means these are our basic syllabus for the Faculty of Law DO. But as you know that I never teach according to the syllabus. Teaching according to the syllabus is not big issue. I always keep in my mind at the time of discussion in your class that you can
appear for the competitive exam, and at that time whatever I am discussing that should be relevant. मेरे माइंड में जब भी डिस्कस करता हूँ तो एक माइंड में रहता है कि ऐसी टीचिंग होनी चाहिए कि सेमेस्टर का एग्जाम तो ठीक है कि तुम लोग कैसे एग्जाम देते हो तो सबको मालूम है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. If you analyze syllabus of FSI, that is the food safety, food state, so that is the Food Safety and Standard Authority of India. If you write in the Google FSI, that is the F, that is the FSSAI. FSSAI, FSSAI. If you mention in the, if you write in the Google FSSAI, you will get whole the information about that. Yesterday, when I was searching about the syllabus competitive exam role of this subject in the competitive exam, I got some information that FSSAI, which is autonomous body, FSSAI, which is autonomous body which performs its work under the Ministry of Health and Welfare, had issued notification for the appointment of certain officers. तो मैंने देखा कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो कई सेपरेट कैटेगरी के नोटिफिकेशन है. अगर कोई स्टूडेंट्स बीटेक किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है. जैसे मान लीजिए कि मैं सोच रहा था कि उस एडवर्टाइजमेंट को ग्रुप में एक बार शेयर कर दूं, लेकिन मैं उसको होता काम बहुत सारे हो जाते हैं, मैं मिस कर गया. उसके सिलेबस में एक बार चले जाना, देख लेना, उसमें बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. एक इस पार्टिकुलर एक्ट को पढ़ लेना, जीएस पढ़ लेना, उसका फॉर्म निकला हुआ है, उसका भी एक्सपायरी डेट नहीं, मतलब अभी फॉर्म भरा जा रहा है, अभी कुछ टाइम है उसका, देख करके उसका फॉर्म भर दो. तो हमारे कहने का मतलब है कि उस एडवर्टाइजमेंट में कई कैटेगरी हैं, कई कैटेगरी में एक कैटेगरी लॉ की भी है. अब मान लीजिए कि तुम्हारा ग्रेजुएशन में साइंस है तो तुम अभी भी अप्लाई कर सकते हो. मान लीजिए तुम्हारा ग्रेजुएशन में साइंस नहीं है, सिलेबस देख लेना, आई एम नॉट श्योर, एवरीथिंग आई एम नॉट श्योर कि क्या क्वालिफिकेशन है. मैंने पढ़ा, रीडिंग किया, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाया. लेकिन ये देखा कि बीटेक का क्वालिफिकेशन मांग रहा था, क्योंकि सुमित बीटेक किया हुआ, तो मेरे माइंड में थोड़ा सा सेट कर गया कि हो सकता है कि अप्लाई कर सकता है. तो उसमें लॉ का भी एक क्वालिफिकेशन था. तो लॉ का क्वालिफिकेशन में तुम क्वालिफाई करोगे 2 साल बाद, 2 से 1.5 साल बाद क्वालिफाई करोगे. तो जो वैकेंसी आती है, मतलब जुडिशरी की आ गई, एपीओ की आ गई, मार्केट में तो हल्ला मच जाता है कि इस चीज की वैकेंसी आ गई, भर दो, और उसमें मैक्सिमम बच्चे फिलअप कर देते हैं XYZ. लेकिन जो वैकेंसी 2-4 वैकेंसी आती है जो स्पेशल, मतलब कि डिपार्टमेंट में आती हो या कुछ इस समथिंग डिफरेंट करके आती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत पास नहीं रहता है. तो कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से फॉर्म में बहुत कम पड़ते हैं. ये नहीं कहते हैं जैसे हमारे तरफ मूर्ख कोई नहीं है, लेकिन ऐसा होता है. तो इस तरह की वैकेंसी को तुम लोग हमेशा ध्यान में रखना. और LLB पास करने के बाद भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं जो अपना वैकेंसी निकालते हैं, उसके लिए तुम अपना अप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो, देख सकते हो. ठीक ना. तो एक उसका है क्वालिफिकेशन है, उसके सिलेबस में है एक पार्टिकुलर एक्ट जो तुम्हारा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में. उसके बारे में तो आपको तो पूछेगा ही पूछेगा, बाकी 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो तुम सर्च कर सकते हो, दे सकते हो. तो हमारे कहने का मतलब है कि देखो सिलेबस में जो भी हो, हम लोगों की टीचिंग का एक ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इस पार्टिकुलर एक्ट क्या कहता है. उसी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें सिलेबस भी कवर करना है, दोनों चीजें साथ में रखना है. उसको ध्यान में रखते हुए, दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे. अगर हम लोग पार्टिकुलर केस पर कवर करें तो सिलेबस हम 3-4 दिन में कवर कर लेते हैं. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग के पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है. 2 टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही थ्रोली कवर भी कर लिया है, NDPS भी कवर कर दिया है, और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का भी कवर कर लिया है. तो हमें कुछ फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे. थोड़ा पेशेंस तुम सब रखना. तो कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द ड्यू LLB here is that, as you know that how to read, how to prepare for the semester exam as well as the competitive exam. Best method is that collection of the previous year question paper. Once you collect the previous year question paper, you can understand in a better manner.
भाई किसी फ्रेंड ने इसको ड्राफ्ट किया है, इसको थोड़ा मैं सरप्राइज हूँ कि वो कैसे ड्राफ्ट कर दिया। फाइल तो मेरे पास ही थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उसने एकदम इसको ड्रास्टिक चेंज डाल दिया है इसमें। इन दिस वे पॉइंट इज दैट, ओके, नो पॉइंट इज दैट 2015 का क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर फूड सेफ्टी अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट? In this way, you have to read only the section 18. You have to read only the section 18. एक मिनट कैसे चेंज हो गया? ये गड़बड़ हुआ, किसी ने कर दिया फाइल। इस फाइल को किसी ने लग रहा है कि वो कर दिया, चेंज कर दिया है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसके जस्ट यहीं पर आंसर लिखा हुआ था, एक वर्ड का आंसर था यहाँ पे। Here answer was that section 18. You have to discuss section 18 of that particular act. एक मिनट चेंज करें क्या? चलो leave it. It means at time of discuss in detail the definition of food under the Food Safety and Standard Act in the context of the decided cases. एक मिनट लूंगा थोड़ा सा, किसी ने फाइल पूरा चेंज कर दिया है, मैं थोड़ा सा एक मिनट लेना चाहूंगा। इसको मैं, तो वर्ड फाइल मेरे पास ही है, उससे मैं सेव करते ही आ जाएगा, दूसरा मैं चेंज कर लेता हूँ। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, मैं पिछला क्लास लिया था ना जे सेक्शन का, उस पर ये फाइल में शेयर किया था, शायद वहां से कुछ उस तरह से आ जाता होगा। रुक जाओ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट, फाइल नंबर 2 कर लेता हूँ। वेट 2 मिनट्स। रुक जाओ, ये आ गया। देखो ये है। Yes. In this way, my point is that these are the previous year question paper. Question is that what are the principles to be followed for the food safety under the Food Safety and Standard Act? Regarding this point, we have to discuss. I will discuss later on. Define the food here. This is there is a question paper you can solve later on. No problem in that. Come to the introduction of this topic. What is the introduction of this act? Here, the introduction of this act is that Food Safety and Standard Act was published in the Gazette on the 23rd August 2006. So my point is that when it was published in the Gazette on 23rd August 2006. It's several. What is the date of the enforcement of this act? When it came into the force? It came into the force on different dates. It came into the force on different dates. My point is that some provisions of this particular act came into force in 2006. Some came into force in 2007, 2008, 2009. In this way, it is not possible to mention any particular date as a commencement of this act. So there is no any particular date for the commencement of this act. For example, if you see the bare provisions of section 1 of this act, Section 1 says that it shall come into force on such date. So where on such date? Once you see the quotation here, there some provisions came into force on 15th October 2007, same came in 2008, same 2009, same 2000 June, like this. So my point is that if anyone asks what is the date of the enforcement of this particular act, you can say that
Some provisions came into force in 2007, some 2008, some 2009. So it is a very difficult to mention what is the date of the enforcement of this particular act. So that's why in the competitive exam they always ask on which particular date this act was notified in the Gazette. This date is the 23rd August 2006 on which this particular date was notified. Whether where it is applicable, earlier it was not applicable to the Jammu and Kashmir, but after the 2019 to the whole of India, including Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. The present time, this particular act is applicable to the whole of India. Regarding the contents, total section of this particular act is 101. Total particular section is 101. हम लोग देखते हैं ना शादी ब्याह में भी हम किसी को देते हैं तो 100 रुपीज नहीं देते हैं, या तो 51 रुपया देते हैं, 101 देते हैं, या 501 देते हैं. इस तरह से एक शुभ मुहूर्त है इसका 101 rupees. So this act contains 101 sections and 2 schedules. How many schedules? 2 schedules. It means what is the structure of this particular act? This particular act can be divided into 2 parts. First part regarding the section, second part regarding the schedule. Regarding the section, 101 section. Regarding the schedule, there are 2 schedules. First schedule is related to section 5 class 1E. It means first schedule divides the states into the zones. How many zones? 5 zones. For the purpose of enforcement of this act, states and union territory are divided into zone. How many zones? 5 zones. First schedule talks about the division of the union territory and states into the zone. For example, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. But in all these zones, don't try to search Jammu and Kashmir or Ladakh. But as you know that when the Jammu and Kashmir was converted into the Union Territory, after that, section 1 of every statute was amended. Because in every statute, everyone knows that talks about the section 1 talks about the extent of that particular act. That is the point. But regarding the main point, till now there is no amendment has been done. But this particular schedule should be amended, and that union territory must also be put in these 5 zones. So my point is that for the enforcement of this act, first schedules, according to the first schedule, all the states and union territory have been divided into 5. States, 5 zones. That's why, for example, you can see here that zone number 5 talks about the union territory. That is the Pondicherry, Jammu Kashmir, Ladakh, Pondicherry, Lakshadweep, Delhi, Daman Deep, Dadar Nagar Haveli, Chandigarh, Andaman Nicobar Deep Samu. It means zone number 5 must be amended, and here Jammu and Kashmir and Ladakh, two more union territory must be inserted in zone number 5. The first schedule talks about the zone number 5. Second schedule, which is related to the section 97. Section 97 deals about the repealing provisions. It means section 97 of this particular act says that certain law must be repealed. So what law were repealed? Those laws were repealed which have been mentioned in the second schedule. Under the second schedule, total 8. Total, how many laws were repealed? Total 8. But these laws can be divided into 2 parts. First part talks about the order. These are the 7 orders were repealed, and second part, that is the statute. One statute was repealed, that is the Prevention of Food Adulteration Act 1954 was repealed. As you know that what is the difference between order and repeal? Order and statutes.
Statutes are enacted by the Parliament, state legislative body. Order is promulgated by the Government of India with the help of President like this for the implementation of that law in a proper manner. It means schedule. It means schedule number second talks about the repealing provisions. In this way, we can say that these orders and law were repealed, and now Food Safety and Standard Act 2006 is applicable. It means Food Safety and Standard Act repealed all these law. Repealed all these law. In this way, we can say that that is the Food Safety and Standard Act, total 101 section, 2 schedule. First schedule deals about zones, 5 zones, and second schedule deals about repealing and saving, and by that schedule, 7 orders and 1 statutes have been repealed. Under that particular act, several provisions have conferred wider power in the hand of central government to make the law, to make the rules for the proper implementation of this particular act. By using those powers, central government issued the notification, and the name of the notification is that Food Safety and Standard Rule 2011. So my point is that at time of discussing this particular statutes, you should always keep in mind Food Safety and Standard Rule. As you know that whatever has not been mentioned in the statutes and that is necessary for the proper implementation of that law, those things are mentioned in the rule. For example, this is the rule. That there are 2 parts of this PDF file. Initial part talks about the this notification in the Hindi language, and subsequent part talks about this notification in the English language. The Gazette of India was notified on which particular date? On the May 2011, and by this you can come to the second part which talks about the English language. Yes. Here it has been clearly mentioned that central government starting one line says that under the several provisions of this particular, read with section 91, under the several provisions of this particular act empowers the central government to issue the notifications, and by using these powers, central government has issued the notification, and notification name of the notification is that Food Safety and Standard Rules 2011. What is the name of this particular act? Is that Food Safety and Standard Rule 2011. See, this is the name of this particular rule. It means at a time of teaching, I will teach with the combined effect of FSS Act as well as the rules. For example, if I want to apply for the license, I want to start food business. I want to apply for the license. How to apply? What is the format? To whom that application must be given? All these things have been mentioned here. For example, in this case, format has also been mentioned. These are the format. You can say, for example, seizure of books of account and other documents. It means here the rule talks about the several formats. It means in this particular rule, several formats have been mentioned, and you can take printout and you can apply for the license and for other work. These are the several points. It means at a time of discussing the FSS Act, we should always keep in mind FSS Rule 2011, and combined reading of both will enhance your knowledge. So my point is that in the brief, we can my point is that at time of discussing this act, we can in the brief, what is the notification? What is the introduction of this particular act? It simply says that Food Safety Standard was published on 23rd August 2006. It is applicable to the whole of India.
there is no particular date for the enforcement of this particular act. Total section 101, total schedule two schedules. First schedule, division of the states into zone. Second schedule, repealing of the orders and act, and by using the powers conferred under this act, central government has issued the notification, and name of the notification is Food Safety and Standard Rule 2011. Now question arises, what is the object, why this particular act was enacted, what was the need? क्योंकि कोई भी काम होता है तो विद सर्टेन ऑब्जेक्ट के साथ ही होता है, विद सर्टेन नीड, विद डिमांड ऑफ द टाइम के हिसाब से लॉ इनेक्ट किया जाता है, लॉ पास किया जाता है। अब अलग बात है कि हम लॉ के रिगार्डिंग हर एक व्यक्ति का अपना अपना आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकता है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने देखा ही होगा कि मिस्टर मोदी जी के रिजीम में 3 ऑर्डिनेंस आए हुए हैं एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग। अब होता क्या है कि जैसे कि अब पार्लियामेंट ने उसको इनेक्ट किया हुआ है, तो हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी बात को रख सकता है, और कुछ प्रो में भी आते हैं, कुछ कॉन्स में भी आते हैं, तो ऐसे चलते रहता है, डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट से पूछिए कि व्हाई यू हैव इनेक्टेड दिस, गवर्नमेंट से पूछिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिस्टर मोदी गवर्नमेंट से पूछिए, या उनके मिनिस्टर से पूछिए, तो व्हाई यू हैव promulgated these ordinances, 3 ordinances regarding the agriculture. As you know that ordinances have been converted into the law. Now these are in the form of the law. They will give some argument. They will say that we have enacted these laws with this object. It means all the laws are enacted with certain objects. Whether that object is suitable for the society or not, it is interpretation of each and every person. I am not going on that particular point. So that's why generally, from where we can get the object of any particular statute, there are 2 methods. First method is that preamble of that particular act. Preamble आप पढ़िए किसी भी statutes का, आपको वहां से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कि व्हाई इट वाज इनेक्टेड। और एक आता है रीजन एंड स्टेटमेंट आता है, जब कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव बॉडी, जब मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहां पर एक रीजन वो लिखा जाता है, रीजन एंड स्टेटमेंट आता है। तो उसके थ्रू उसमें बताया जाता है कि जो हम बिल को स्टेटमेंट मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव बॉडी में, हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्यों इसको पास कराना चाहते हैं। तो वहां से भी आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट आप पा सकते हैं। 2 मेथड होता है। और तीसरा मेथड ये होता है कि हम यहाँ पे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, किसी का किसी भी तरह से इसका इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं कि स्वामी अच्युतानंद तीरथ एंड अदर्स का एक केस है, जिसके हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। तो माय पॉइंट इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस object of this particular statutes with the help of 2 things. First thing is that with the help of object, and second is that with the help of Swami Achyutanand Tirath and others versus Union of India and others. As you know that if you see your syllabus, in your syllabus 3 landmark judgment have been mentioned. First is that Muhammad versus Union of India, second is Nestle, and third is the Swami Achyutanand Tirath and others versus Union of India. At present time, I am going to discuss, I am taking the help of Swami Achyutanand case to discuss the object of this particular act. So with the combined reading of the preamble and Swami Achyutanand Tirath case, we can summarize what is the object of this particular act. चलो डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दैट टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू फूड। इन रियलिटी सुप्रीम कोर्ट इन अच्युतानंदन केस डिड नॉट मेंशन एनीथिंग न्यू। दे हैव बाइफर्केटेड द preamble into 4 parts, because if you see the here preamble of the act, if you see the preamble of the act, you can get the what was the object of this particular act. Yes, even you can see the first object, this is the preamble of the act, this is the Bayer Act. An act to consolidate the laws relating to food and establish। भाई आवाज हमारी आ रही है कि नहीं?
पता चले कि हम क्लास भी ले रहे हैं और तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा सर क्लास। आ रही है सर, आ रही है। सही है। ऑनलाइन में तो यही प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि स्टूडेंट्स के पास जो पढ़ा रहे हैं वो पहुंच रहा है कि ब्रेक हो गया, कहाँ क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चलता, सब वैक्यूम में चलता है। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लास में टीचर भी बोर हो जाता है और स्टूडेंट तो बोर हो ही जाता होगा, सब जानते ही हो तुम सब। अब ऑफलाइन में रहता है कि आदमी थोड़ा सा आमने सामने देखता है, मुस्कुराता है, समझता है कि सामने वाला सोच क्या रहा है, कैसे चल रहा है क्लास, सही डायरेक्शन में है। अब यहाँ तो ऑनलाइन में किसी से मजाक भी नहीं कर सकते हो, कौन कहाँ रिकॉर्ड करे, कौन डाल दे, कौन कंप्लेंट मार दे, ठिकाना ही नहीं। ये सब बड़ी समस्या होती है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन रहता तो अंशुल के बारे में कमेंट कर ही देता। दिव्या भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, एक कष्ट है, कोई दिन का टाइम है, गुजर जाएगा। So my point is that an act, or what is the object of this particular act? You can bifurcate preamble of this act into four parts, or you can take the help of the Achyutanandan Tirath case as you wish. Read the bare act preamble. An act to consolidate the laws relating to food. What is the first object? First object of this particular act is that to consolidate the laws relating to food. You can read this particular point in the light of the section 97. In the light of the section 97, read with schedule second. Read with schedule second. In this way, you can clearly find out that how many orders were repealed? 7 orders and 1 statutes related to foods were repealed. It means after substituting 8 laws, now new law is that Food and Food Safety and Standard Act. This is the first part. The first object of this particular act to consolidate the law relating to the food. Even if you read the name of this particular act, name of the particular act itself denotes two objects. First object is that food safety. First priority is that food safety. Second object of this particular act is that to maintain standards of the quality of that particular act. It means by interpretation of the Food Safety and Standard Act, you can say that name of this particular statute itself denotes two objects. First object, food safety, and second object is that to maintain the standard of this particular act. And after reading the preamble, you can say that this act was enacted to consolidate the law relating to the act. What was the earlier? Earlier was that there were several laws. And what happens? Sometimes one law conflicting to other law. Some law were conflicting to other law. That's why it was creating a lot of problems. It was confusion. That's why it was thought that no, laws should not be uncertain. Law should not create confusion. Law must be crystal clear. That's why in this perspective, law was all laws were repealed and new law, single law, unified law was enacted, which covers every types of the matters related to the Food and Standard Act. The first object of this particular act is that to consolidate the law relating to the food safety. What is the second object of this particular act? Second object of this particular act is that to establish FSAI. To establish the FSAI. FSAI means FSSAI. अब देखो हिंदी के लैंग्वेज में फसाई, फसाना या किसी को बरगलाना एक अलग वर्ड है, लेकिन जब फसाई जब हम यहाँ पे कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि फसाई मीन्स हियर द फूड F safety
and Standard Authority of India. So what is the full form of FSSAI? Full form of the FSSAI is that Food Safety and Standard Authority of India. This is the full form of the FSSAI. Once you write in the Google FSSAI, you will get whole details about the FSSAI. You will get whole details. So my point is that, as you know, that earlier there were several bodies. Everyone is saying, I am boss, I am boss, I am boss, I am boss. Now, no one is boss except FSSAI. It says that once you read, here the first object was there to consolidate, second was there to establish the FSSAI. Why FSSAI was established? What was the purpose of the establishing the FSSAI? You can draw further. It means third object is related to the second object. Purpose was that laying down science-based standard for articles of food. It means science-based articles. As you know that there are several types of articles of the food. Some articles which are quantity is much more, but quality is lesser, or which are not nutritious, जिनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है. अब क्या होता है गांवों में, क्या होता है जहाँ की शॉर्टेज है, गरीबी है, वहां के आदमी को पता चलता है कि अगर चावल, पानी, नमक, मिर्च और बाई चांस उसको प्याज और अचार मिल गया तो सोचता है कि आज बहुत अच्छा खाना खाने को मिल गया. इतना खाकर के वो बहुत ही खुश हो जाता था. क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि बस इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ द पर्संस. अब क्या होता है शहर में, क्या होता है जिसके पास, देखो शहर में गरीब अमीर आदमी हर जगह है. गरीब आदमी शहर में भी है और गरीब आदमी गांव में भी है. शहर में भी अमीर है और गांव में भी अमीर है, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो माय पॉइंट इज दैट अब चावल की क्वांटिटी है, चावल की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, उसका पेट भर गया, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में तो जब तक उसको मिल्क नहीं मिलेगा, फ्रूट नहीं मिलेगा, बाकी चीजें नहीं मिलेगी तो न्यूट्रिशियस तो होगा नहीं. इसी तरह से कुछ कंपनियां ऐसी करती हैं कि क्वांटिटी में, पैकेट में इतना चीजें भर देंगी, ऐसे लगेगा कि समथिंग कुछ ज्यादा ही है, लेकिन जब वो न्यूट्रिशन के मामले पर आएंगे तो वो क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है. ठीक ना, मतलब क्वालिटी बहुत ही कम होती है. इसमें FSSAI को कहा गया है कि you should also keep in mind, you should also make standards, scientific standards. Which types of standard? आपको जो स्टैंडर्ड स्टेब्लिश करेंगे, साइंटिफिक स्टैंडर्ड स्टेब्लिश करेंगे. एंड यू विल मेंटेन, यू विल रेगुलेट. व्हाट विल यू डू? यू विल रेगुलेट. एक मिनट. You will also regulate manufacturing, storage, distribution, sale, import, ensure availability, like this point. Okay. As you know that manufacturing, storage, distribution, sale, import, if you purchase any packets of any drink, any bottle of the drink or any package for the chips, namkeen, biscuit, whatever is that, on that it will be written that FSSAI. आप कोई भी चीज सामान खरीद लीजिए खाने पीने की, उस पर FSSAI लिखा ही रहेगा. FSSAI लिखा रहेगा, उसका कोडिंग नंबर रहेगा. अगर जिस क्वांटिटी पे FSSAI लिखा हुआ नहीं है उसको मत खाइए, उसका सब स्टैंडर्ड है और उस पर केस किया जाएगा. FSSAI उस पर केस करेगी, क्योंकि FSSAI का सीधा सीधा इसमें कहना है कि मतलब FSSAI का मार्क होना चाहिए. बहुत सारी चीजें हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे कब FSSAI यूज होगा, कब यूज नहीं होगा. लेकिन बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जिनका ब्रांड है, उन पर आपको FSSAI का एक सिंबल मिलेगा, लिखा रहेगा एकदम FSSAI मिला रहेगा, क्योंकि वहां से रेगुलेट करता है. कौन रेगुलेट करता है? FSSAI. देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज इट विल यूज. एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्ट इज दैट to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि लोगों को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड पहुंचे वो सेफ पहुंचे एंड होलसम पहुंचे. So these are the four objects which you can read from the preamble of this particular act. And same thing was also quoted in the
Achyutanandan case. Swami Achyutanandan case. This was also quoted. There are four objects to consolidate the law relating to food, to establish FSSAI, that is the Food Safety and Standard Authority of India, to regulate manufacturing, storage, distribution, sale and import. और जो भारत से जो आएगा सामान दुनिया के अलग देशों से जो भारत में खाने पीने के लिए आएगा उसको उस पर भी नजर बना करके रखेगा. टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंश्योर availability of safe and wholesome food for human consumption. These are the basic introduction of this particular act and object of this particular act. Come to the authorities. What are the authorities which we have to discuss in semester exam? As you know that FSSAI section 4, every year one question has been asked regarding the designated officer, food safety officer, food analyst. In this case, you have to write in semester exam regarding these points. In semester exam, solving the question from this particular act is very difficult. सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन डिफिकल्ट सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि मैं देख रहा था, मान लीजिए किसी सेमेस्टर में किसी ईयर में FSSAI पे 60 नोट लिखना है, किसी में डिजाइनेटेड ऑफिसर पे आपको 10 वर्ड का 10 लाइन 10 नंबर का लिखना है, किसी में फूड सेफ्टी पर लिखना है, किसी पर फूड असिस्ट पे लिखना है, किसी पर आपको प्रिंसिपल लिखना है. मतलब क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन देखो. यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फूड सेफ्टी. यू हैव टू डिस्कस सेक्शन 18. Define the food and can be analyzed by procedure. Yes, it can be analyzed by procedure. Write short note on the Food Safety and Standard Authority. Okay, FSSAI. You have to write short note on the FSSAI. Come to the another point. Here, see. Write the function of Food Authority. Food Authority. Whenever I use the word Food Authority means FSSAI. Okay, because according to section 3. M means Murari, M means Mr. Modi. M, according to section 3, M denotes that food authority means as authority which has been established under section 4. Food authority means food safety and standard authority of India as established under section 4. You have to discuss. See the food safety officer. You have to discuss food safety officer. See the question. You have to discuss food safety officer. See, food safety officer you have to discuss in one question. Another question is that, see the question is that, discuss the power and the function of designated officer. Designated officer. See here is that designated officer. So my point is that to solve answer from this, to solve questions from this topic, you have to read several provisions. If you want to read only 2 or 3 cases and say that, okay, this is a very small unit, after reading 3 cases, we can solve the answer in the semester exam. No, it is impossible. That's why my point is that I will take some classes. I may take 4, 5, 6, 7 classes and I will discuss all these points, designated officer, food safety officer, like this. Come to the, I am going to start systematic class, that is the Food Safety Standard Authority of India, FSSAI. What is the FSSAI? I am going to discuss these points. At present time, I am not going to discuss designated officer. I am not going to discuss food safety officer. I am not going to discuss food analyst. I am going to discuss the food FSSAI. It means my point is that whenever I will discuss the FSSAI, I will write some question. Whenever I will discuss another topic, wait for 1 minute. For example, if I touch another question, so for example, once I will start the food safety officer, I will write here the question paper.
attempt any two, it means my point is that I have written the question paper in two places. In the starting, all the questions related to the this particular act. After that, topic wise. Suppose that I am deciding I am going to discuss Fasai in the starting, only questions regarding the Fasai. If I am going to discuss food safety officer, only question of the food safety officer. If I am going to discuss designated officer, I will discuss the here the designated officers. In this way, there are two methods regarding the writing of the question paper. Suppose that I am going to discuss meaning of the food, whether it can be analyzed. This again I have written the question paper here. My point is that why I am written here again and again question paper. क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत दुष्ट आदमी हो. क्योंकि थोड़ा सा मैं इधर उधर पढ़ाऊंगा, तुरंत कर दोगे सर सिलेबस में तो है ही नहीं, आप फालतू का पढ़ा रहे हो, क्योंकि केस लिखा हुआ है सिलेबस में और आप खींच रहे हो 2-4 दिन से. इसीलिए मैं तुम सबों को ये पहले ही बता दे रहा हूँ कि सिलेबस पर केस पर ज्यादा ध्यान मत देना, जितना पढ़ाऊंगा पढ़ते रहना, अदरवाइज बाद में क्वेश्चन आएगा इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे. ये मेथड है. और आज का केस का जहां तक मुझे लग रहा है आज का टाइम खत्म हो गया है 8:30 का. अगर तुम इजाजत दो तो और पढ़ा दें. अगर तुम्हारा कोई क्लास है तो भाई एज योर विश, डिस्टर्ब नहीं करूंगा. तुम पहले अटेंडेंस लिख करके बता दे रहे हो कि सर रहने दीजिए, हम लोग अटेंडेंस लिखना शुरू कर दिए हैं. चलो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस. लिख दो लिख दो. हाँ तब पहले ही अटेंडेंस लिख दिया करो, तुम लास्ट में लिख रहे हो. लिख लिया सब.